The next topic is employment of people in different sectors. In this, we will discuss that where are most of the people employed. Before that, let's have a look into the graph. Graph number 2 and graph number 3. Graph number 2 indicates share of sectors in GDP, that is in percentage. Different sectors are contributing GDP. कितना contribute कर रहा है करके clearly mention किया है. 1973-74, 2013-14. You can check in your textbook also. And see, in 1973-74, the contributions are like this. Less contribution किसका है? Secondary sector का. But the scenario changed in 2013-14. The contribution of agriculture, that agriculture sector means primary sector, become very less, near about 15 to 20%. And whereas tertiary sector, vast change. That means GDP में tertiary sector का contribution ज़्यादा हो गया, ज़्यादा contribution, right? ये clear हो गया आपको? मतलब share of sectors GDP मतलब डिफरेंट सेक्टर कितना GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना वैल्यू ऐड कर रहा है, हमारा जो इनकम में ऐड कर रहा है, वो ही देख रहा है. इसमें हमने देखा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत कम कंट्रीब्यूशन है उनका, वेरास सर्विस सेक्टर का मतलब जो ट्रेजरी सेक्टर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, राइट? मन में रख दिया ना. अब आगे बढ़ो. अगला ग्राफ शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट. इनकम को इनकम आपको टेरिटरी दे रहा है ज़्यादा, पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जॉब कौन सा सेक्टर दे रहा है? सी 1972-73 में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉयमेंट दे रहा है वो सेक्टर कौन सी है? क्लियरली विजिबल, प्राइमरी सेक्टर. दैट मीन्स प्राइमरी सेक्टर इज अ लीडिंग एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयमेंट देने वाला एम्प्लॉयर, राइट? एंड उसमें देखो टर्शरी और सेकेंडरी एंड टर्शरी तो आपको बहुत कम एम्प्लॉयमेंट देते थे 72-73 में. सी द कंडीशन इन 2011-12. 11-12 में भी आपको ज़्यादा चेंजेस, यहाँ पर जो वास्ट चेंज हुआ था ना इसका, ऐसे चेंजेस नहीं हो रहे हैं. यहाँ पर भी देखो अभी भी मैक्सिमम जॉब कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर. सी डिफरेंस समझना है आपको. कंट्रीब्यूशन जब जीडीपी मतलब इनकम ज्यादा देता है कौन है? अभी टर्शरी सेक्टर. बट जॉब कौन प्रोड्यूस करता है? एग्रीकल्चर. समझ में आ गया? सो एग्रीकल्चर जॉब तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन इनकम नहीं देते हैं. दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द इंडियन फार्मर्स. दे आर फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. व्हाई दिस हैपन? सो एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया. वेयर, देखो सी, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड. इसका आंसर आपको मिल गया. आप बोलेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर. क्लियर. आप पूछेंगे व्हाई, पूछे तो क्या बोलेंगे? बिकॉज इंडिया में प्राइमरी सेक्टर क्या प्रोड्यूस करते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, आपने पढ़ चुका है 9th में पालमपुर. आप हमें पालमपुर के बारे में बोलेंगे, उसके बारे में पूछे तो आप बोलेंगे सर तो वो तो भूल ही गया, हम तो 9th में वो क्वेश्चन पेपर के साथ ही छोड़ के आए क्लास में. वी आर अनअवेयर ऑफ, मीन्स वी आर नॉट रिमेंबरिंग दोस थिंग्स, ये बोलेंगे. इसलिए मैं खुद बताता हूँ आपको. व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? लिखा भी है मैंने आपको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. पहले इसके बारे में बताता हूँ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है. सपोज मैं एक फार्मर हूँ, मेरे पास एक छोटा सा लैंड है, मेरे 4 बच्चे हैं, 4 बेटा है, ठीक है, समझ लो. 4 बेटा नहीं है मेरा, फिर मैं बोल रहा एग्जाम्पल बोल रहा. मैं एक इंडियन फार्मर है, इंडिया का विलेज का एक छोटा सा फार्मर. मेरे पास मेरा अपना 4 बेटा है. जवान हो गया, मैं थोड़ा सा ओल्ड हो गया, ठीक है, ज़्यादा नहीं हुआ, हल्का सा हो गया. तो मैं तो फार्मिंग करने के लिए जाते हैं. आई यूज टू गो टू द फील्ड एंड डेली रूटीन की तरह कल्टिवेशन एंड ऑल द थिंग्स आई एम डूइंग. अब क्या हो गया, नॉर्मली माई मीन्स एल्डर वन, वो ज़्यादा पढ़े नहीं हैं, वो मेरे साथ आते हैं फार्मिंग करने के लिए आते हैं.
वी यूज टू कल्टिवेट थिंग्स एंड हार्वेस्टिंग, ऐसे हो रहा है। अब मेरे बाकी तीनों बच्चे पढ़े लिखे, पढ़ के आगे बढ़ गया, बट दे आर नॉट गेटिंग एनी जॉब बिकॉज वी आर अनेबल टू प्रोड्यूस much opportunities in secondary and tertiary. That is why my kids are at home only, they are not getting a job. So क्या सोचेंगे वो, सोचेंगे कब तक मैं पापा और भैया का मतलब जो उन्होंने मेहनत कर रहे उसका खाऊं, वो भी मेरे साथ निकलेगा काम करने के लिए। अब क्या हो गया, वो 4 मैं 1 5, हम 5 लोग हमारा उस फील्ड में काम कर रहे हैं, बट आई एम नॉट टेकिंग द पोटेंशियल ऑफ दिस रेस्ट 3। हम दोनों से वो काम हो जाएगा, इन तीनों को हटाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम चलेगा। बट बाहर से देखेगा तो यस, संतोष एंड हिज 4 sons आर वर्किंग इन द फील्ड। क्या काम है? फार्मिंग। बट रियल पोटेंशियल हो रहा है वहाँ पे, ले रहा है वहाँ पे? नहीं ना। रिजल्ट मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे 2 आदमी का काम है, 3 और लगे हुए हैं। मतलब ऐसा कंडीशन है, लुक बिजी बट रिजल्ट इज नथिंग या डूइंग नथिंग, यही है। दैट इज नॉट डिस्गाइज और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, इट्स अ सिचुएशन इन विच मोर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड ऑन ए जॉब दैट आर ऑप्टिमली रिक्वायर्ड। जितना चाहिए उससे भी ज्यादा लोग काम में लगे हुए हैं, राइट? उसी को बोलेंगे डिस्गाइज। हमने पालमपुर में पढ़ चुका है ये, एंड पालमपुर में भी नहीं है, पीपलास रिसोर्स में पढ़ा है, पीपलास रिसोर्स। इट इज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब लोगों को दिखेगा कि ये काम कर रहे हैं बट हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है। वो तीनों अपना टोटल पोटेंशियल दे आर नॉट यूटिलाइजिंग इन द फील्ड, कर ही नहीं रहे, जस्ट पत्थर उड़ा के रख दिया या दो ऐसा कर दे वैसा कर दे, थोड़ा छोटा मोटा काम कर रहे हैं। दे आर नॉट यूटिलाइजिंग देयर ओन पोटेंशियल। That is a hidden unemployment, and this type of unemployment is generally found in the Indian agriculture, means primary sector. We can see this type of unemployment can see in the primary sector, right? This is known as the disguised unemployment. I hope you understood. एक तो हो गया, अगला है जो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। पूछेंगे आपको डिफरेंस बिटवीन द डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इजी है, हमारा पड़ोस में देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब जो आपका एनसीआर में, मीन्स सिटी में, अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया में क्या होता है, हम लोग एक फ्लैट में रहते हैं, वहाँ पर पूछेंगे बेटा क्या कर रहे हैं, बेटा तो पढ़ाई हो चुका, क्या किया, बीटेक हो चुका है, काम सर्विस कर रहे हैं, सर्विस तो नहीं मिला। पढ़ लिखा होने के बाद भी उसको सर्विस नहीं मिल रहा है, क्लियरली विजिबल है, एंड सो ऑन सो कसन का कोई जॉब नहीं है। स्टडीड वेल, कंप्लीटेड डिग्री, देन ऑल्सो ही इज नॉट गेटिंग एनी जॉब। दैट इज नॉट ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। इधर देखो डिस्गाइज मीन्स हिडन है, देखे तो काम कर रहे हैं लेकिन कुछ पोटेंशियल नहीं यूज कर रहे हैं, दैट इज हिडन वी कैन से। यहाँ पर लड़का घूम रहा है, पबजी खेल रहे हैं, है ना, पढ़ लिखने के बाद भी पबजी खेल रहे हैं, इतना खर्च करके पढ़ाया लिखवाया, इसने मेहनत किया, जॉब नहीं मिल रहा है। व्हाई? बिकॉज वी आर अनेबल टू प्रोड्यूस द जॉब इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, सॉरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। सो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, राइट? सो इसको बोलेंगे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। जी, व्हेन अ पर्सन हैज नो जॉब इन हैंड एंड डज नॉट अर्न एनीथिंग एट ऑल is said to be an open unemployment. I hope you understood the meaning or difference between the open unemployment and disguised unemployment, right? And then open unemployment, it is clearly visible. हम देख सकते हैं, सो आठ सौ का बेटा घूम रहा है, अरे पढ़े लिखे हो गया, पढ़ा है लिखा है, लेकिन देखो घूम रहा हो, कहीं जॉब ही नहीं मिला। अरे बेचारा क्या करे, हमें से मिलने के टाइम पूछेंगे कुछ हो गया, कहीं लग गया तेरा, वो सुन के परेशान हो गया। दिस वाज क्लियरली विजिबल open unemployment, right? And this type of unemployment visible in industrial sector, इसका रिजल्ट क्या होगा? It lead to poverty and starvation. जो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का रिजल्ट होगा पॉवर्टी, क्योंकि देखो बच्चे बड़े हो गया, वो कमाने टाइप हो गया है। इफ दे आर नॉट गेटिंग द जॉब देन क्या होगा? कंडीशन बुरा हो जाएंगे, है ना, उस कंडीशन। और ऊपर से पढ़ाई के लिए इतना पैसा लोन वगैरह ले रखा है, वो सब कुछ है, तो फिर कंडीशन बुरा ही होगा। सो दैट लीड टू पॉवर्टी एंड स्टारवेशन। दिस इज द कंडीशन ऑफ, एंड दीज आर द कंडीशन
ना। जो आपका अगर पूछेगा तो बोलेंगे हमारा कंट्री का एग्रीकल्चर फील्ड का और प्राइमरी सेक्टर का क्यों है ज़्यादा लोग काम करते हैं, कहाँ पर हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर। क्यों है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोड्यूसेस दिस डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। और कोई सेक्टर कोई प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो लोग क्या करेंगे, वह काम करेंगे। सपोज मेरा बच्चे को अगर चांस कोई इंडस्ट्री बना दिया, कोई कुछ वहाँ पर जॉब मिलेगा, अपॉर्चुनिटी, तो मेरा बच्चे वहाँ चले जाएंगे। वाई दे आर गोइंग कमिंग विथ मी, वाई दे आर स्पेंडिंग टाइम फॉर दिस फील्ड, दे विल गो इन द इंडस्ट्री सेक्टर या टर्शरी सेक्टर, दे आर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटी, दैट इज वाई दे आर कमिंग टू मी and engage in the primary sector, right? Yes. Dear students, now it is time for questionnaire. In the previous two segments I have not given any question to you, so together I am giving this in this video I am giving the questions. First of all, I just want to give to the 1 mark questions, then followed by 3 and 5 marks. So first question is that what are economic activities? These are activities performed with the motive of earning money. Second question is which sector helps primary and secondary sectors? The tertiary sector helps both primary and secondary sector. Right. And the third question, in which sector are natural products changed into other forms through ways of manufacturing? In secondary sector, the natural products are changed into other forms through ways of manufacturing. Right. Fourth question, when we produce goods by exploiting natural resource, in which category of economic sector with activities come? The production of commodities through natural processes come under primary sector. Right. Distinguish between primary, secondary and tertiary sectors. The difference between primary, secondary and tertiary sector is as follows. Primary sector, it is the sector which exploits natural resources and produces natural goods and services. It is famously known as agriculture sector. It includes farming, forestry, fishing, mining, animal husbandry, quarrying, etc. Secondary sector, this sector transforms natural goods into manufacturing goods and create more utility for human beings. This is popularly known as industrial sector. Right. It includes manufacturing units, small, medium and large units, cooperatives and multinational corporations. Tertiary sector, it provides useful services to primary and secondary sector which smoothens their working. It is also known as service sector. Good. It consists of transportation, banking, labor. It also includes some of the essential services like doctors, teacher, lawyer, cook, barber, call center, etc. Excellent. And the next question is, what is meant by gross domestic product or GDP? How is it calculated? GDP refers to the market value of all the final goods and services produced within a country during a particular year. The value of final goods is only used to calculate GDP. In India, the mammoth task of measuring GDP is undertaken by the central government ministry. The sum of production in the three sectors gives us the GDP. The money value of goods and services should be added rather than adding up their actual numbers. Right, actual numbers. Right. Next question is, distinguish between intermediate goods and final goods. Right. The difference between intermediate goods and final goods is as follows. Intermediate goods. These goods are used in production process as raw material for the production of final goods. These goods are not included in GDP to avoid problem of double counting. Final goods. These goods are used for final consumption and cannot be manufactured further. These goods are included in GDP. Right. Next question is, name the sector that is the largest employer in India. Why does this sector produce only a quarter of the national GDP? Right? Primary sector is the largest employer in India. It produces only quarter of national GDP because people in agriculture sector are underemployed. Apart that, 2-3 points are workers in agriculture sector not producing as much they could.
वो जितना उसके कैपेबिलिटी, मैंने बोला पोटेंशियल यूज़ नहीं कर रहा, जितना वो प्रोड्यूस कर सकते उतना प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. अपार्ट दैट डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है. वन मोर थिंग है दिस है लार्जली एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे इंडिया में सब्सिस्टेंट फार्मिंग है, ठीक है, मतलब कमर्शियल फार्मिंग जैसे नहीं है, सब्सिस्टेंस अपने घर के लिए यूज़ कर रहे हैं और जो नॉर्मल HYV सीड्स वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं. सब्सिस्टेंस इन नेचर इन इंडिया में सब्सिस्टेंट फार्मिंग होता है, ठीक है. एंड क्या बोलेंगे, मोर ज़्यादा वेल्थ इसे ज़्यादा वेल्थ कमाना है ना, ऐसे सोच करके और इसका टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर नहीं रहे. दैट इज़ ऑल्सो वन रीजन, राइट. And the next question is that difference between the disguised and or open employment and disguised unemployment. When a person has no job in hand and does not earn anything at all, it is said to be a situation of open unemployment. Correct. It is clearly visible. This type of unemployment is generally found in the industrial sector. Disguised unemployment is a situation in which more persons are employed on a job that are optimally required. Right. If a part of the labor force is withdrawn, the total production remains unchanged. बिल्कुल It is hidden employment. This unemployment is generally found in the Indian agricultural सेक्टर. ये बिल्कुल क्लियर बोली है कि अगर हम लोगों ने उस लेवल से कुछ डिस्गाइज बोल रहा हूँ, कुछ लेबर को अगर छीन लिया ना, खींच लिया ना, तो देयर इज नथिंग विल हैपन, ठीक है. ये बिल्कुल सही है. एंड एक क्वेश्चन मैंने भूल गया, वो क्वेश्चन मुझे पूछना है. एक्सप्लेन वाई सर्विस सेक्टर इज गेनिंग मोर इम्पोर्टेंस इन ग्लोबल इकोनॉमी, राइट. सर्विस सेक्टर गेनिंग मोर इम्पोर्टेंस, वाई? Service sector is important because in any country several basic services like transport, bank, insurance, education, institution, etc. are required, and the government has to take responsibility for the provision of these services. Right. The development of agriculture and industrial leads to the development of service such as transport, trade, storage, etc. Good. As income level rises, certain section of people start demanding many services like eating out, tourism, private hospital, etc. Over the past decade, certain new services such as those based on information, communication, technology have become important and essential. Government policy of LPG has also led to growth of this sector. Thus, this sector smoothens the working of primary and secondary sector. It becomes a key sector by providing finance, transportation, communication, which helps in making handsome value addition. Right answer. ठीक है. So इतना questions आप लिख लेना. I hope you understood. If you are having any problem, any doubts, you may please directly contact me through the WhatsApp or a direct call also you can. It's no problem. Thank you. Have a nice day.